L apostrophe. These are known as article partitive. Now, they are similar to the contractile, the DE formation, but the meaning is totally different. These partitive are used for quantify, I mean for the quantity. Mostly used with the foods items or food stuff. Now, when I say food items, it is of course the fromage, you know, and you have lay as a milk, right? And then there are a lot of item of the food item. So जब भी कोई food item होगा, we have to put the article participle, and these are the formation of article. Du is used for masculine food stuff. This is used for feminine. This is used for plural, right? And this is used for vowel. And that vowel should be masculine and singular, of course. इतना क्लियर है अभी तक कोई डाउट इसके अंदर? Okay. Now, it is the spellings are seems to be similar with the contracte that we did yesterday, these ones, but this is of the, from the, and the meaning of contracte is some or any in some point of time, right? For example, je mange dash fromage. So manger is the verb, will be the. If you don't know the meaning of manger, then this is the food items, and here you need to identify whether this food item is masculine or feminine. Since it is masculine, I use du as a formation. Is it clear so far? Not getting confused? Yes, Okay. Then next, now I said in all the food item we have this article participle, right? There are exceptions to it. What are the exceptions? There are 4 verbs where if food items comes, right, then we will not use participle. Not use participle. वो 4 verbs कौन कौन सी है? aimer, préférer, adorer, and détester. Aimer means to like, préférer means to prefer, adorer means to love, and détester means to hate. These 4 verbs are the verbs of likes and dislikes, right? Since the food item is not being consumed in these 4 verbs, we will not use article participle. In that case, if these 4 verbs comes, we will use definite articles, right? And वो definite articles हमारे कौन से हैं? Le, la, le, and L apostrophe. Example: je aime dash gâteau. Full stop. Je mange dash gâteau. So now there is a food item in both the places. Gâteau means cake. In the first sentence, we are using aimer as a verb. Since it is coming under these 4 verbs, so I will not use partitive. I will use definite articles. Here I will use le. Now this is manger verb not coming in these 4 verbs. I can use partitive articles. I will go ahead and use du.
Any questions so far? No, sir. No. Okay. फिर आप बस एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो, मैं वो लिखती हूँ Right, एक right, right. सेकंड। Yes, yes, yes. ठीक है इतना, या और ऊपर करो? फिर सही। Let me know if I go further when you write it. यस सर, लिख रही हूँ। Good. Now, we understood that we have to use in the front of food item. अब जो food item है, we have to know whether they are masculine or feminine. If they are masculine, then only I'll be able to use our thing, our masculine du and le for these four verbs. तो वो मुझे masculine feminine आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. So generally, I mean, I'm giving you this rule because it will cover 90% of the cases. So in this formation, you will be able to resolve the masculine and feminine of the food items at the 90% level. So हमने पढ़ा है जिसके एंड में ई आता है वो फेमिनिन है, जिसके एंड में ई नहीं आता वो मैस्कुलिन है, और जिसके एंड में एस आता है वो प्लूरल. राइट. एस के साथ अगर एक्स आ जाए तब भी इट विल बी अ प्लूरल. जनरल रूल है. राइट. नाउ 6 फूड आइटम है, आई थिंक 6 ही है. यस, 6 फूड आइटम है जो मेरे ई आता है जिनके एंड में, लेकिन फिर भी वो मैस्कुलिन. सो एक्सेप्शंस में से ही आता है, मैम जो देती है एक्सेप्शन से देती है. ये 6 आइटम अगर मुझे लर्न कर लिए और मैंने ये वाला रूल लर्न कर लिया, तो आई शुड बी एबल टू कवर 90% ऑफ द फूड आइटम केसेस वेयर आई विल बी राइट इन पुटिंग अप द मैस्कुलिन और फेमिनिन आर्टिकल. सो वो 6 वर्ड्स कौन से हैं? सो पहला तो है फ्रोमाज, विच मीन्स चीज जिसके एंड में ई आ रहा है लेकिन फिर भी मैस्कुलिन है. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट इनटू द मैस्कुलिन कैटेगरी. देन वी हैव sucre. Sucre means sugar. This is cheese. Okay. Then we have champagne. This means champagne. Okay. Champagne means champagne. Then we have the fourth item we have is cheese. Let me remember it. And then we have tea, buffet, tea, cafe, and the last is your butter. So these 6 items are ending with E, but still they are considered as a masculine. So this is the only exceptions in food items where mostly the questions are come, and especially comes with the tea, coffee and fromage. ये 4 तो बहुत कम. ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन सो फार, कोई डाउट? Okay, so let's see the common food items that we have generally. See, so if you see, these are the very very commonly used food items. Alcohol, right?
Baguette, E is coming again masculine. Banan, E is feminine, right? Then le beurre, we studied this is an exception. La bière, E is coming at the end, it is feminine, right? You know, the rule will follow as it is. Then you see that le biscuit not coming E, cafe, E is coming and at the end it is masculine, right? Sherry's, it is S is coming, it is plural. Champagne, we studied it's a kind of wine, right? And it will go like that. These are very commonly food items that normally comes into the exams, right? So let's do one small exercise related to it and see that how we are able to solve these questions and how these questions are coming in the exams. So we'll do a little bit of it. So let's see. It's 3 to 7. Would you like to read, Veer, these items? Yes, sir. Hmm. Go ahead and open the rule in front of you so that you're able to answer. Yes, sir. Il ve giude fru me il ne veut pas eu. Hmm. VEUT is your vulvar verb. Vulvar verb, which means to want. Okay. So he want dash fruit juice, but he do not want is your water. Okay. So il verb. So now what we will put here? Sir, sir, du. D. Do use the fluid. Okay, it is masculine. Why not DES? Because it is plural, right? Yes, sir. What is yes? Huh? Sir, DES. No, because you were right in DU. I'm not saying that you are wrong. The reason behind will not use as a plural form because fruit juice is a one item, right? It's a juice. It's not multiple. For example, cherries that we studied just before, they are multiple. They are more than one. Here, the fruit juice, it is made up of multiple fruits, lekin it is one juice, right? That's why it is considered as a masculine item, right? Now, il no veut pas do. Tell me. Sir, le. L, L E or L apostrophe? L, L apostrophe. L apostrophe. Okay. Okay. But why L apostrophe? Is it is it one of the four verbs that we studied? Aimer, prefere, adore, deteste. Because then only we'll have the definite articles coming in the front of food items, right? Sir, but water food is only liquid. Water is liquid. I understand. But my rule says that when these four verbs will come, aime, prefere, adore, deteste, these four verbs, then only I use definite articles, le, la, le. Otherwise, it will be Sir, D apostrophe. D apostrophe. Yes. So, Kuhu, I need the answer from you that why D apostrophe? Because when you see the list of article partitive, it should be DU, DEL apostrophe, DES, or DELA. D apostrophe is nowhere in this. Why? Sir, क्योंकि सर डी apostrophe contracted articles डी apostrophe contracted articles में भी आता है. हाँ आता है लेकिन वो प्रॉपर नाउन के सामने आएगा ना.
डी और डी अपोस्ट्रोफी वी विल यूज इन द फ्रंट ऑफ प्रॉपर नाउन, बट यहां पर तो प्रॉपर नाउन नहीं है. ओके, I'll go back to my notes. We studied also, in last class, the negative things, right? How to say negatives in French. So what is the rule of negative? Whenever there is a verb, उससे पहले any लगेगा, उसके बाद पा लगेगा. Is it correct my understanding? और इसमें कोई doubt है? Yes. Right. For example, je, वो, sorry, je aime le stylo. ये नॉर्मल सिंपल सा सेंटेंस है. इसको मुझे अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो je ne aime pas le stylo ऐसे करूंगा मैं, राइट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इज देयर एनी चैलेंज इन दैट? ओके, सो अब वर्ब से पहले न है, वर्ब के बाद पा है. डू यू रिमेंबर वन मोर रूल ऑफ नेगेटिव वेयर if anywhere it will come du, dela, des and del apostrophe, or un, une or des. These both will become de. Remember that rule or not? Or no? You say me. नहीं याद है ना? नहीं याद है? नहीं सर, नहीं याद है. नहीं याद है. ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. नेगेटिव में और डिटेल में करेंगे. तो हम ऐसे समझ लेते हैं अभी कि अगर कहीं पर भी ये जो मेरा आर्टिकल पार्थिव आ रहा है, राइट, जितना भी मेरा आर्टिकल पार्थिव, ये जो 1 2 3 4 जो आइटम आ रहे हैं, इनका नेगेटिव में डी या फिर डी अपोस्ट्रोफी बन जाए, राइट. और ऐसे ही ऊपर में जितने भी ये कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स आ रहे हैं, इनका नेगेटिव में डी या डी अपोस्ट्रोफी बन जाए. क्लियर है इतना? है नहीं? ये कंफ्यूजन हो गया, ये पूरे कंफ्यूज हो गए. सर पार्टिटिव वाले के साथ भी डी और डी अपोस्ट्रोफ हो जाएगा. ओनली इन द केस ऑफ नेगेटिव, ओके. राइट. तो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको कट करता हूं, अभी नहीं कर रहे हैं हम इसको. लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज ऑन दिस. ठीक है, ओके, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज. भूल जाओ जो नेगेटिव करा है अभी. ठीक है, लेट्स फॉरगेट, otherwise it will get confused. So coming back, so I am imagining that there is no no pa here. Forget this. Ilver dash o. O is my starting with the vowel. If anything starting with the vowel, it will be d and apostrophe. Is that okay so far? It is correct. Yes, sir. Okay, let's move further. Next is this. Okay. El prepare. क्या वो कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, मैं पढ़ रही थी. हाँ, now read this fifth one. El prepare dash salad et dash porn de ter pura dinner. Mhm. Salad is sir dala. De la, okay, okay, and Et they they फॉर्म देते हैं. वेरी गुड. ठीक है, देन ये भूल जाते हैं यहाँ पर नेगेटिव है. ओके, भूल जाते हैं कि ये नेगेटिव है. लेट्स गो अहेड. वी कंटिन्यू. पॉलिन बुआ डैश ते एल एम ते. सर पॉलिन बुआ दू द्यूते. वेरी गुड. द्यूते एल एम ले एल ई. एल ई. क्लियर हो गया? समझ में आ गया कैसे लगा है ये दोनों? ये सारा वर्ब्स के ऊपर प्ले करेंगे. ओके, नेक्स्ट 8th वन.
Cool. Anish aim dash trees हम्म, is pronounced dash trees. हम्म, सर पहले वाले में एल ई ल L-E, very good. is pronounced Pren. It's not prenon, it's pren pren. हाँ, सर डी theory. Very good. Correct. Veer, ninth one. Monic, aim. यस सर हम्म, मॉर्निंग एम ए हम्म, ई सर ले एल ई एस हाँ, very good. Okay. एल एल वे हम्म, सर सर इसमें डी ई एस डे DS, day cross. Very good. Perfect. सो अब हमारे सारे आर्टिकल्स हमें क्लियर है, राइट? उसमें कोई डाउट है अभी तक, कोई क्वेश्चन है, राइट? ठीक है। अब नाउ